आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। मतलब लायबिलिटी कैसे डिस्चार्ज होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, राइट। सेक्शन 82 डील्स विथ डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी। रिमेंबर, Section 82 deals with discharge from liabilities, and Section 83 deals with if the holder allows the drawee more than 48 hours, exclusive of all the public holidays, to consider whether he will accept the same, or previous parties not consenting to such allowance and thereby discharge them from liability to such holder, right. So first we need to discuss section 82, which is deals with discharge from liability under negotiable instrument, right. So first we need to understand that the maker, acceptor or endorser respectively of a negotiable instrument is discharge from liability। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन डिस्चार्ज हो सकते हैं लाइबिलिटी से अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सो फर्स्ट होगा द मेकर, देन एक्सेप्टर एंड देन एंडोर्सर, राइट। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ ए लायबिलिटी इज डिस्चार्ज्ड अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सो इन दैट केस फर्स्ट यू नीड टू राइट दैट द मेकर, एक्सेप्टर और एंडोर्सर रेस्पेक्टिवली of a negotiable instrument is discharged from liability thereon, right. So section 82 provides the methods of discharge from liability by cancellation, by release and by payment। by cancellation बहुत easy है, ये नाम से ही पता चलता है कि कैंसलेशन से कैसे डिस्चार्ज लायबिलिटी डिस्चार्ज होता है। सो by cancellation means to a holder thereof who cancels such acceptors or endorsers name with intent to discharge him, and to all the parties claiming under such holder। cancel करके कैसे ना, to a holder thereof who cancels such acceptors or endorsers name with intent to discharge him, and to all the parties who is claiming under such holder। Now how to discharge liability through release? So by release means to a holder thereof who otherwise discharge such maker, acceptor or endorser, and to all parties deriving title under such holder after notice of such discharge, right। Now by payment, पेमेंट से कैसे डिस्चार्ज होता है लायबिलिटी ना, टू ऑल द पार्टीज देयर टू इफ द इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू हुम, टू बियरर और हैज बीन एंडोर्स्ड इन ब्लैंक एंड सच मेकर, एक्सेप्टर और एंडोर्सर मेक्स पेमेंट इन ड्यू कोर्स ऑफ द अमाउंट ड्यू देयरन, देन लायबिलिटी विल बी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज। बाय पेमेंट, पेमेंट करके लायबिलिटी को डिस्चार्ज किया जा सकता है। टू ऑल द पार्टीज देयर टू इफ द इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू बियरर। बियरर मीन्स हुम? बियरर मीन्स एनीवन होल्डिंग समथिंग सच एज ए चेक, प्रॉमिसरी नोट, बैंक ड्राफ्ट और बॉन्ड। बियरर कौन होते हैं ना, एनीवन होल्डिंग समथिंग सच एज ए चेक, प्रॉमिसरी नोट, बैंक ड्राफ्ट और यू कैन से बॉन्ड। एंड एंडोर्सर कौन होते हैं ना, एंडोर्सर इज अ पर्सन हु ऑथराइज्ड टू साइन ए नेगोशिएबल सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू ट्रांसफर ओनरशिप फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। रिमेंबर, एंडोर्सर कौन होते हैं ना,
to sign a negotiable security, authorized to sign a negotiable security in order to transfer ownership from one party to another. And remember one thing, that in case of bearer, this becomes important when the document, generally called a negotiable instrument, state it is payable to bearer, which means whoever holds this paper can receive the fund due on it. Right? So this is it all about endorser, bearer. Now, as I already discussed, that in three ways a liability is discharged under negotiable instrument. One is by cancellation, then by release, then by payment. कैंसिलेशन करके और पेमेंट को रिलीज करके या फिर बाई पेमेंट करके लाइबिलिटी को डिस्चार्ज किया जा सकता है अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. एंड सेक्शन 82 डील्स विद मेथड्स फॉर डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी. नाउ सेक्शन 83. Section 83 provides that if the holder allows the drawee more than 48 hours, जितने भी पब्लिक हॉलीडेज है उसे छोड़कर, to consider whether he will accept the same, all previous parties not consenting to such allowance, and thereby discharge them from liability to such order, to such holder. Right? Again, section 84 provides that where a check is not presented for payment within a reasonable time, and the drawer at the time when payment ought to have been made, as between himself and the banker, to have the check paid and suffers actual damage through the delay, in that case he discharged to the extent of such damage, and that is to say, to the extent to which such drawer is a creditor of the banker to a larger amount that he would have been if such check had been paid. Right? But एक केस स्टडी हुआ है इसमें इन अब्दुल माजिद वर्सेस गणेश दास कालूराम AIR 1954. It was held that a drawer of a check who wants to take advantage of section 84 must prove to fact. इस केस स्टडी के अनुसार अगर कोई ड्रॉयर ऑफ ए चेक who wants to take the advantage of section 84, then in that case he must have to prove two facts. One, he had sufficient money in deposit in the bank, first and most important condition, in his account to honor the check, and he had suffered actual damage on account of non-payment of the check within a reasonable time. अगर ये दोनों फैक्ट प्रूव कर सकता है, in that case a drawer of a check can able to take the advantages under section 84. Under section 84, one is he had sufficient money in deposit in the bank in his account to honor the check, and he had suffered actual damage on account of non-payment of the check within a reasonable time. Right? Now, as per section 85, section 85 क्या कहता है? Section 85 provides that where a check payable to order purport to be endorsed by or on behalf of the payee, the drawee is discharged by the payment in due course. Where a check is originally expressed to be payable to bearer, the drawee is discharged by payment in due course. To the due course means within due date. Payment in due course to the bearer thereof, notwithstanding any endorsement, whether in full or in blank, appearing thereon, and notwithstanding that any such endorsement purport to restrict or exclude further negotiation. So, discharge from liability अगर क्वेश्चन आए तो सिर्फ हम लोगों को इतना ही लिखना पड़ेगा कि सेक्शन 82 डील्स विद
discharge from liabilities by cancellation, by release and by payment. So कौन कौन डिस्चार्ज होते हैं लाइबिलिटी से? एक तो द मेकर, देन एक्सेप्टर, देन एंडोर्सर रेस्पेक्टिवली ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी देयरन by cancellation means to a holder thereof who cancels such acceptors or endorsers name with intent to discharge him and to all the parties claiming under such holder. So cancellation, endorser means what? Endorsers means authorized, a person who authorized to sign a negotiable security in order to transfer ownership from one party to another party, right? And by release means to a holder thereof who otherwise discharge such maker, acceptor or endorser and to all the parties deriving title under such holder after notice of such discharge. नोटिस पहले नोटिस देते हैं, उसके बाद लाइबिलिटी डिस्चार्ज होता है अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. इसे कहते हैं बाय रिलीज मीन्स टू ए होल्डर देयरऑफ हु अदरवाइज डिस्चार्ज सच मेकर, एक्सेप्टर और एंडोर्सर एंड टू ऑल द पार्टीज डिराइविंग टाइटल अंडर सच होल्डर आफ्टर नोटिस ऑफ सच डिस्चार्ज. नाउ अगर पेमेंट, हाउ टू डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी थ्रू पेमेंट एज the name suggests to all the parties thereto if the instrument payable to bearer is whom? Bearer is anyone holding something such as a check, promissory note, bank draft or bond. This becomes very important when the document, generally called a negotiable instrument, state it is payable to bearer, which means whoever holds this paper can receive the funds due on it. So by payment means to all the parties thereto if the instrument is payable to bearer or has been endorsed in blank and such maker, acceptor and endorser makes payment in due course of the amount due therein. अगर acceptor, makers and endorser मेक्स द पेमेंट इन ड्यू कोर्स के अंदर अगर पेमेंट कर दिए तो लाइबिलिटी विल बी डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. सो ये 3 मार्क का क्वेश्चन से शॉर्ट नोट में आएगा, तो इसको हम लोगों को अच्छे से याद करना पड़ेगा. सेक्शन 82 एंड सेक्शन 83, सेक्शन 84 एंड सेक्शन 85. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेक्शन 82. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द सेक्शन एंड थ्रू whom liability will be discharged. One is maker, acceptor and endorser. So this is it all about discharge from liability under Negotiable Instrument Act 1881. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.